First question. If pressure at half the depth of the lake is equal to 2 by 3 times the pressure at the bottom of the lake, then what is the depth of the lake? If pressure at half the depth of the lake, pressure at half the depth, pressure at your half the depth is equals to 2 by 3 times of the pressure at the bottom. Pressure at the bottom. यही बोला है ना? And what is the depth? So pressure at the half the depth मतलब बेटा ये देखो हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है एंड इसका टोटल हाइट है मान के चलो h, इसका हाफ मतलब यहाँ पर कहीं पर इस पॉइंट पे, यानी इसका हाइट हो गया h/2. h/2 के पास प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर एट योर h/2 विल बी इक्वल टू, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? P is equals to h into rho into g. तो यहाँ पर हो गया h/2 into density of liquid into g. तो यहाँ पर हो गया ये मेरे पास h/2 into rho into g is equals to 2 by 3 times of pressure at the bottom. Pressure at the bottom. Pressure at the bottom कितना हो जाएगा बेटा? Pressure at the bottom part जहाँ पर हो रहा है basically, so it will be equal to your h into rho into your g. And what is the depth of the lake पूछ रहा है. Depth of the lake मतलब मान के चलो अगर ये हाइट मेरे पास h ले रहा हूँ बेसिकली, so मेरे पास निकलेगा क्या? डेंसिटी भी चले जाएगा. प्रेशर एट योर हाफ द डेप्थ, टोटल हाइट ऑफ द लिक्विड मेरे पास मान के चलो सब h डैश है. क्या हो जाएगा बताइए? Can anyone give me the answer? वॉल्यूम भी चेंज होगा ना बेटा यहाँ पर, क्योंकि जैसे जैसे अंदर जा रहे हो बेसिकली आपको वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा. इसलिए अगर इनिशियल वॉल्यूम आपके पास जब इस पे गिर रहा है अगर v है, इसलिए अगर पूरा नीचे चले गया इट विल बिकम फॉर मी हाउ मच वॉल्यूम? हाफ. ठीक है नहीं? यानी आई कैन अप्लाई द रिलेशन P1 V1 मस्ट बी इक्वल टू योर P2 into your V2. इसलिए सो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मान के चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसलिए प्रेशर एट योर हाफ द डेप्थ, यानी कुछ हाफ द डेप्थ ले रहा तो मैं स्मॉल h ले रहा हूँ इनटू रो इनटू g इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉप, दैट विल बी 4/3 पाई इनटू योर r³ h के पास. इसलिए h के पास अगर मैं वॉल्यूम v की लेके चल रहा हूँ तो नीचे कितना चले जाएगा? यहाँ पर डाउन के पास प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा? व्हाट विल बी द प्रेशर? दिस इज द प्रेशर एट योर बॉटम. दिस इज द प्रेशर एट योर बॉटम. This is pressure at your surface. Surface के पास सिर्फ atmospheric pressure रहेगा P0 plus volume 4/3 pi into your. This will be equal to your R dash. ठीक है ना? कुछ कट रहा है क्या? देखो यहाँ पर h is the depth of the lake बेटा. Total h is the depth of the lake मान के चलो. P0 चले गया और this one is h rho g into your 4/3 pi into your r³ is equals to your 4/3 pi into your r dash cube. सही ना? I can't use this. यही कर लेते हैं. चलो प्रेशर एट हाफ द डेप्थ विल बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ दिस वन. चलो बताओ कितना हो रहा? आया किसी को? सर वाई वी आर टेकिंग द वॉल्यूम. नहीं जरूरत नहीं है बट आई वाज थिंकिंग हम लोग वॉल्यूम ले लें. यही वाला ले लीजिए जैसा प्रॉब्लम में बोला उसके हिसाब से ही कर लीजिए. दैट विल बी मोर देन. यही वाला ले लीजिए. प्रेशर एट हाफ द डेप्थ मतलब h rho g. यहाँ पर ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड करेगा P0, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करेगा दैट इज नथिंग बट P0 प्लस h rho g. और बॉटम के पास क्या हो जाएगा बेटा? बॉटम के पास दिस विल बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ योर h rho g प्लस इसके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड करेगा दैट विल बी इक्वल टू योर P0.
isn't it? So मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ right now for the given condition अगर height of the liquid यहाँ पर h/2 ले रखा है मैंने और यहाँ पर height ले रखा है मैंने h, इन दोनों को simplify करके see how much I'm getting right now for this one. So this one is 2/3 times of h rho into g plus of your 2/3 times of your p naught और ये हो गया p naught plus of your h/2 rho into g ऐसा कुछ कर लो is it? All the p terms को एक जगह ले लो और all the h terms को एक जगह ले लो. So it is a p naught minus 2/3 तो ये कितना बन जाएगा बेटा 1/3 times of p naught. So that will be equal to 1. ये 2/3 minus 1 यानी ये बन जाएगा 2/3 minus 1/2 मतलब this will become for me 1/6 1/6 into h into rho into g. ठीक है ना अपने को चाहिए क्या height. So h will be 3 1s are 3 2s are. So h will be equal to your this will become for me 2 times of p naught divided by rho into g. So it is 2 into your p naught. P naught क्या होता है बेटा atmospheric pressure 10 to the power of 5 divided by this will be equal to how much for me density. Density of liquid क्या होता है 10 power 3 acceleration due to gravity में 10 ले रहा हूँ. So ये 3 और ये 1 4 तो ये चले गया 2 into 10 20. So this will be 20 meters आना चाहिए. Very good. आ गया सभी को ठीक है चलो next one. A siphon in use is demonstrated in the following figure. The density of the liquid flowing in the siphon is 1.5 gram per cc. The pressure difference between the point P and S यानी इस point पे और इस point पे. Very good question है देखो बेटा दोनों भी open to atmosphere है. So both points are on the surface of the liquid and these points are in open to atmosphere. So both the points will possess similar pressures. तो कितना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P के पास भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा और S के पास भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा दोनों आर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड on it both of them are open to the atmosphere. So pressure difference will be equal to how much बेटा दोनों का क्या पूछ रहा है प्रेशर डिफरेंस यानी प्रेशर एट योर P is equals to 1 एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर एट योर S भी कितना है 1 एटमॉस्फेयर है इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है डेल्टा P यानी 1 minus 1 यानी it will be equal to 0. क्लियर है वेरी गुड चलो ये वाला देखो when large bubble rises from the bottom of a lake to the surface its radius doubles if atmospheric pressure is equal to that of the column of the weight of height h then depth of the lake will be equal to how much ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार a large bubble है बेटा मेरे पास ये वाला ऐसा सिचुएशन है और इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ तक ठीक है और यहाँ पर एक बबल है isn't it? जिसका रेडियस है मान के चलो r जैसे जैसे ऊपर चले जाएगा इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो इसका रेडियस बन जाएगा कुछ ज्यादा दैट इज नथिंग बट 2r ठीक है ना इट्स रेडियस डबल बोला है प्रॉब्लम है इट्स रेडियस इज बिन डबल इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द कॉलम ऑफ योर हाइट यानी p नॉट की वैल्यू इज इक्वल्स टू योर h rho g बोल रहा है बेसिकली तो यहाँ पर जितना प्रेशर होगा isn't it और वॉल्यूम होगा यहाँ पर इसका वॉल्यूम अगर मान के चलो मैं इसका वॉल्यूम ले रहा हूँ यहाँ पर v1 तो इसका वॉल्यूम यहाँ पर कितना हो जाएगा v2 isn't it तो इसका अगर मैं वॉल्यूम यहाँ पर v1 ले रहा हूँ इसका वॉल्यूम हो गया v2 तो v1 विल बी इक्वल टू 4/3 पाई इंटू r क्यूब बन गया और v2 जब ऊपर गया तो इसका वॉल्यूम बन गया 4/3 पाई इंटू योर 2 टाइम्स ऑफ योर r और ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पर p नॉट होगा isn't it अगर इसका हाइट ऑफ द लिक्विड मान के चलो ऑफ h है तो यहाँ पर जो प्रेशर इस पे लगेगा इस पे जो प्रेशर लगेगा दिस विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h rho g लगेगा ठीक है ना अब इसको सिंपलीफाई करिए p नॉट प्लस h rho g p नॉट प्लस h rho g इनटू इसका वॉल्यूम यानी 4/3 पाई इनटू योर r क्यूब विल बी इक्वल टू ऊपर के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर p नॉट इनटू ये हो गया 4/3 पाई इनटू इसका रेडियस हो गया 2r क्यूब ठीक है ना तो ये कितना बन गया p नॉट इंटू 4/3 पाई इंटू योर r क्यूब प्लस h rho g इंटू ये हो गया 4/3 पाई इंटू योर r क्यूब इज इक्वल्स टू योर p नॉट इंटू 4/3 पाई इंटू योर 2 क्यूब कितना होता है 8 टाइम्स ऑफ योर r क्यूब आ गया सभी को इज इट क्लियर
सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ रहा है देख लीजिए जल्दी से। पूरे पी नॉट टर्म्स को एक जगह ले लीजिए बेटा और ये वैल्यू को बाहर ले लीजिए, so that will be more better. How much I am getting, you see? (7h) very good. I'm leaving the calculation for you बेटा. So आंसर कितना आना चाहिए इसका? ये जो h हम लोग ने लिया ना, this h must be equal to your आ गया? That should be equal to 7h. If atmospheric pressure is equal to the water column h, got it everyone? 7h, very good. चलो नेक्स्ट वन, ये तो मैंने कराया था, ऐसे वाले मॉडल्स आपको करना है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. A vertical U-tube of uniform inner cross section contains mercury in both the sides of its arms. A glycerin of density 1.3 gram per centimeter column of length 10 centimeter is introduced into one of its arms. Oil of density 0.8 gram per centimeter cube is poured into the other arm until the upper surface of the oil and glycerin are in the same horizontal level. Okay. Find the length of the oil column. Density of the mercury is given as 13.6 gram per centimeter cube. Can anyone try it better? बोलो बेटा. कोई कर सकता है? A vertical U-tube of uniform inner cross section contains mercury in both the sides of its arm. A glycerin has been introduced into one of its arm and oil of density 0.8 gram is poured into the other arm until the upper surface of oil and glycerin are same. यानी इसका सरफेस और इसका सरफेस दोनों सेम है. ठीक है. Find the length of the oil column. Density of the mercury भी दे रखा है. चलो कोई करेगा इस पे? मैंने अभी बताया था, ये वाला पॉइंट अगर मैं लूं ऐसा, यहाँ पर जितना प्रेशर होगा इस पॉइंट पे, यहाँ पर भी उतना ही प्रेशर होना चाहिए, isn't it? तो अगर ये वाला h है, ये वाला 10 है और ये वाला h है, तो यहाँ से याद है कि कितना बन जाएगा 10 माइनस ऑफ योर h. ठीक है. और ये पॉइंट A ले रहा हूँ और ये पॉइंट B ले रहा हूँ. ठीक है ना? This is your point A, this is your point B, isn't it? So according to the condition of equilibrium, pressure at your A must be equal to pressure at your B. D आ रहा है 9.6. Okay. हाँ बेटा 9.6 centimeters is the answer. Pressure at your A must be equal to your pressure at your B. Pressure at your A कौन हो बेटा? Atmospheric pressure है यहाँ पर और height of the liquid column. तो atmospheric वैसे भी कैंसर हो जाएगा, तो I'm writing here 10 into, isn't it, h rho. Density कितना दे रखा है इसका? Glycerin का density दे रखा है 1.3 into your G. That will be equal to pressure at B. Pressure at B oil की वजह से भी है और mercury की वजह से भी है. तो ऑयल की वजह से हो गया h into density of your oil कितना दे रखा है प्रॉब्लम में 0.8 दे रखा है. ऑयल का डेंसिटी दे रखा है 0.8 into your G हो गया प्लस ये वाला हाइट भी है ना mercury का, कितना है प्लस 10 माइनस ऑफ योर h into density of your glycerin mercury कितना होता है 13.6 into your G. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लो बेसिकली. सो दिस वन इज 1.3 यानी 13 by your 10 यानी 13 हो जाएगा. ही कर लोगे कैलकुलेशन? एनीवन? यस. ओके. ये हो गया 13 into G because 1.3 is 13 by 10. 10 10 चले जाएगा. That is equals to यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 0.8
यानी this will be equal to your 0.8 मतलब 8 into h divided by 10 into your g plus ये हो जाएगा 10 minus h into your 13.6 into your g. तो क्या एवरीवेयर g कैंसिल हो जाएगा, ag और ag भी चलेगा. सो 13 is equals to 8 into h divided by 10 प्लस ये हो गया 10 into 13.6 minus h into 13.6. पूरे h टर्म्स एक जगह ले लो, बाकी के टर्म्स एक जगह ले लो, सिंप्लीफाई करो, दैट विल गिव मी द आंसर. क्लियर है? सो कितना आ रहा, सॉल्व कर लो. सो इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 9.6 सेंटीमीटर्स. ऐसे वाले प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है बेटा. अच्छा, ये तो जनरल क्वेश्चन ही. इफ टू लिक्विड्स ऑफ सेम वॉल्यूम बट डिफरेंट डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 आर मिक्स्ड देन द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू हाउ मच. जल्दी से बताइए, ये तो आप लोगों को आता है. Two liquids of same volume but different densities ρ1 and ρ2 are mixed, the density of the mixture is. सब लोग देना आंसर. नो मिस्टेक. अगर जूम मीटिंग बंद हो गई तो फिर रिजॉइन कर लो बेटा. Everyone is telling ये, very good. First option is the answer. Next question. ये वाला बेटा. A cubical block is floating in a liquid with half of its volume immersed in the liquid. When the whole system accelerates upwards with acceleration g by 3, the fraction of the volume immersed in the liquid will be equal to your how much? How much beta? Very good question. A cubical block is floating in a liquid with half of its volume immersed in the liquid. When the whole system accelerates upwards with an acceleration g by 3, the fraction of the volume immersed in the liquid will be equal to your fraction of the volume immersed मतलब Vi is equals to your rho divided by sigma into total volume of the body. तो वॉल्यूम इमर्स क्या एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है क्या? Is it depending upon acceleration? No. So volume immerse is depending on what better? Density of the block, density of the liquid, and the volume of the body. It is independent of your acceleration. So volume immersed is independent of acceleration. चाहे वो ऊपर जाए नीचे जाए इससे फर्क नहीं पड़ेगा. अगर half of the volume immersed in the liquid है तो fraction of volume immersed will be half of the only. Yeah, very good. चलिए बताइए. Next one. Two solids A and B float in the water. It is observed that A floats with half of its body immersed in water and B floats with 1/4 of its volume above the water level. The ratio of the density of A to that of your B will be equal to how much? Very good question. Try करिए. Two bodies A and B float in the water. It is observed that A floats with 1/2 of its body immersed in water and B floats with 1/4 of its volume above the water. Okay. A water है. मेरे पास दो बॉडी से, एक हो गया बॉडी ए और एक हो गया बॉडी बी. इसमें क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ द बॉडी इज इमर्स्ड इन वाटर. इसमें हाफ ऑफ द बॉडी इज इमर्स्ड इन द वाटर और यहाँ पर 1/4 ऑफ दिस वन इज अबव द वाटर. यानी इसके अंदर कितना हो जाएगा? 1 - 1/4 होगा. ठीक है ना? बी के लिए इन द वाटर कितना है? 1 - 1/4. Isn't it? अब मैं ये के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, its weight must be balanced by your buoyant force. 3:4 बोल रहा है. चलो चेक करते हैं. फर्स्ट वन के लिए पर ये buoyant force बोलो बेटा. वॉल्यूम इमर्स्ड इज A/2 क्योंकि buoyant force कितना होता है बेटा? buoyant force is volume immersed into density of liquid into your A. Volume immersed is कितना है? Half of the volume of the body. VA into density of water into your G must be equal to your volume of your body mg, that must be equal to your m into g ना. So volume of the body, density of your body into your G. इसमें से कुछ कट रहा है क्या? G और G कट गया, V और VA भी कट गया. So density of water is equals to 2 times the density of your E.
isn't it? यानी density of A will be equal to density of water divided by 2. ये आ गया मेरे पास एक सिचुएशन, ठीक है ना? Then for B वॉल्यूम इमर्स कितना हो जाएगा बेटा? 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. तो ये हो गया 3 by 4 times of your volume of the body, density of the water into G must be equal to volume of the body, density of the body into your G. ये G और ये G कट गया, volume of the body कट गया, तो density of water 3 by 4 times of density of water by 4 is equals to density of the body. ठीक है? Is it clear? So density of the body is 3 by 4 times of density of your water. So density of water कितना है? 2 times है ना? So therefore I can write here rho A divided by rho B will be equal to density of water divided by 2 into density of body कितना है? Density of the body मतलब 4 divided by 3 times of density of water. ये वाला चला गया 2 1 जा 2 2 जा, यानी आ रहा 2 by 3 2:3 आएगा. Very good. ये वाला मिस्टेक नहीं करना बेटा, वो देख लीजिए. नेक्स्ट वन बेटा, a candle of diameter d is floating on a liquid in a cylindrical container of diameter capital D. Okay, इसका सिलेंडर दे रखा है मेरे पास capital D and capital D is much greater than small d as shown in the figure. If it is burning at the rate of 2 centimeter per hour, then remains at the same height, falls at the rate of 1 centimeter per hour, falls at the rate of 2 centimeter per hour. देखो it is burning at the rate of 2 centimeter per hour, यानी एक आवर में 2 सेंटीमीटर घट रहा है, यानी इतना स्लो प्रोसेस, इसका एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट ऑल 0 मान के चलता है, isn't it? So candle of diameter d is been floating on a, इसका diameter कितना है बेटा? कैपिटल D है, और ये d is much greater than of your small d. If the burning is at the rate of 2 centimeter, तो अब ये देखो इसका ऊपर का जो पार्ट ऑफ मास है ना, अभी कितना इमर्स्ड है? हाफ इमर्स्ड, isn't it? ये हाफ वाला जो है ना अभी एयर में है, isn't it? तो अगर ये वाला एयर में है बेसिकली, से ये पूरा मेल्ट होके वाटर के अंदर गिर रहा है, isn't it? So उसने क्या बोला है कि candle of diameter d has been floating on a liquid in a cylindrical container of diameter d as shown in figure. If it is burning at the rate of 2 centimeter per hour, then remains at the same height, falls at the rate of 1 centimeter per hour, falls at the rate of 2 centimeter per hour, goes up at the rate of your 1 centimeter. Obviously तो fall होगा, क्योंकि ये जो वेट की वजह से ऑलरेडी लिक्विड ऊपर गया होगा, ये जैसे जैसे ऊपर का वेट कम होगा तो लेवल बायोन फोर्स क्या हो जाएगा? इस पे कम होगा. बायोन का फोर्स अगर कम हो गया तो इसका लेवल जो है ना फॉल करेगा. कितना फॉल करेगा? इसमें तो हाफ ही जा रहा है ना, पूरा बर्न करने के लिए उसने क्या बोला? 2 सेंटीमीटर. अब ये तो हाफ ही बर्न करेगा ना, तो हाफ वर्क के लिए कितना हो जाएगा? इसका आधा टाइम बन जाएगा. सो दैट मींस इट विल फॉल एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर. ठीक है, हाफ मींस 1 सेंटीमीटर. हाँ ठीक है ना. चलो, गुड क्वेश्चन बेटा. नेक्स्ट वन, फ्रॉम द एडजेसेंट फिगर द करेक्ट ऑब्जर्वेशंस इज pressure on the bottom of the tank A is greater than the bottom B. जरा सोच समझ के देना. The pressure at the bottom of the tank A is smaller than the bottom B. The pressure depends on the shape of the container. The pressure on the bottom A and B are same. क्या आंसर होगा बताइए? दोनों का हाइट सेम है बेटा, एक बार याद रख लीजिए. सभी लोग आंसर देना इसका कमेंट बॉक्स में. A हाइट h है, A भी हाइट h है, वेसल का शेप डिफरेंट है. What will be the answer बेटा? प्रेशर किस पे डिपेंड करता है बेटा? प्रेशर इज इक्वल टू h रो g. वेरी गुड, मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे रहे हैं आंसर्स. हाँ वेरी गुड. और very good, sure. Pressure at the bottom A and B will be the same. Very good. D is the option because it height पे depend कर रहा है. Next one बेटा. Radius of an air bubble at the bottom of the lake is r and it becomes 2r when air bubbles rises to the top surface. अरे अभी करें ना, सेम क्वेश्चन होगा बेसिकली. 7B कुछ आ रहा था आंसर, इसका एक बार देख लीजिए. अब इसका आंसर बताइए. चलो. An incompressible liquid flows through an horizontal tube in shown in the figure. Then the velocity v of the fluid. ये भी सभी लोग आंसर देना कमेंट बॉक्स.
What will be the answer? Incoming liquid will be equal to your outgoing liquid. Incoming liquid must be equal to your outgoing liquid. Na A1B1 must be equal to A2B2 plus A3B3. ये इनकमिंग है ना बेटा, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके इसमें ऐसा जा रहा है, इसमें ऐसा जा रहा है, ये दोनों का सम इन दोनों इनकमिंग के बराबर होना चाहिए। A1 का ये है मेरे पास और इसकी वेलोसिटी है 3, A2 का भी एरिया ये है, B2 है वेलोसिटी 1.5, A3 का भी एरिया कितना है 1.5 टाइम्स ऑफ ये है और इसकी वेलोसिटी B है। कितना बन रहा है बेटा? This is 3A is equals to 1.5 मतलब 3/2 times of area plus 1.5 means 3/2 times of A into B. Everywhere A gets cancelled, isn't it? तो ये हो गया 6 is equals to 3 plus 3B. 6 minus 3, so that will be equal to 3B. ये इधर चला जाएगा. So 3 gets cancelled, so B is equals to